Welcome back, India aspirants, to the 22nd of 40 lectures for the crash course in English NDA by Mart Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember till now we've covered up till prepositions and part of speech. Today we are starting with conjunctions. Without any further ado, let's get right to it. So conjunctions, the definition, they join together two or more words, phrases और clauses. ये हम लोग पहले कर चुके हैं conjunctions के बारे में जब parts of speeches हम लोग ने किया था. पार्ट्स ऑफ स्पीच सेकंड लेक्चर, प्लीज गो एंड रिविजिट. हमने देखा था कैसे वो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को अलग अलग ज्वाइन कर रहे हैं. जैसे वर्ड्स राम एंड श्याम, फ्रेजेस राम्स सिस्टर्स एंड श्याम्स सिस्टर्स, एंड क्लॉजेस राम्स सिस्टर्स आर गोइंग बट श्याम्स सिस्टर्स आर नॉट. So if you do not, please go and revisit. So we'll see this once again though. Ram and Shyam will come. Here you will see Ram and Shyam are two words that are being joined by the conjunction and. People's ignorance and population explosion. ये दोनों अब एक phrases हैं. एक से ज्यादा वर्ड्स हैं पर वर्ब नहीं है इसमें, सेंटेंस नहीं है, ये कोई सेंस मेक नहीं कर रहा है, एक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट भी नहीं है. दैट इज व्हाई इट्स जस्ट अ फ्रेज. आर टू इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, टू क्लॉजेस जॉइंड बाय द कंजंक्शन एंड. शी सेड, ये उसने बोला, इसमें एक वर्ब है, ये एक क्लॉज है. शी वुड कम, इसमें एक और वर्ब है, ये भी क्लॉज है. दैट इज द कंजंक्शन दैट इज जॉइनिंग देम. शी सेड दैट शी वुड कम, दैट इज ऑल्सो relative pronoun. You will remember from the sections in pronouns that we did, I think the 4th and the 5th lecture if I'm not mistaken. Go back and revisit them as well. Now here this is a complex sentence. This entire thing is a complex sentence and this is acting like a noun clause as an object for this verb said, and that is the conjunction or the word that is joining the rest of the clause to this clause. That is why it is called a conjunction. So you will see how here ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है एक दूसरे के साथ, दो क्लॉजेस जिसमें दो अलग अलग वर्ब्स हैं. ऑलराइट, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. वी गॉट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जो दो मेन क्लॉजेस को जोड़ते हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. देन वी हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड कंपाउंड कंजंक्शंस एज वेल. More than one words that act as conjunctions. Now we're going to dig deeper into and see what each and every one of them are. We'll start with coordinating conjunctions. So coordinating conjunctions के examples क्या हैं? And, but, yet, see. He read the notes and returned them to me. He read the notes, he returned them to me. ये दो अलग अलग sentences हैं, दोनों main clauses हैं, एक दूसरे के ऊपर dependent नहीं है. He read the notes, he returned them to me. So he read the notes and returned them to me. He came to meet me, but I was not at home. वो मुझे मिलने आया परंतु मैं घर पर नहीं था. तो he came to meet me, full stop. I was not at home. Both of those sentences can have a separate existence. But is a coordinating conjunction. She worked hard yet she failed. कि उसने मेहनत करी फिर भी वह फेल हो गई. Now they join together two sentences that can have an independent existence. क्या काम होता है coordinating conjunctions का? They join together two sentences. वो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं that can have, जिनकी हो सकती है independent existence. एक स्वाधीन अस्तित्व, मतलब वो अलग से अस्तित्व में हो सकते हैं, अलग से exist कर सकते हैं वो सेंटेंस अपने आप में. They will still make sense. That is why they are called independent clauses or they are called principal clauses, both of them, and this is called a compound sentence. One of them is called the principal clause and the other a coordinate clause. उसमें से किसी एक को आप principal clause कह सकते हो और दूसरे वाले को coordinate clause कह सकते हो. The conjunction that introduces a coordinate clause is called a coordinating conjunction. और वही conjunction जो इस coordinate clause को introduce कर रहा है उसको हम coordinating conjunction कहेंगे. जैसे यहाँ पे and है, वो इस कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ बट है, वो इस कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ येट है, वो इस कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है. तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबसे पहले क्यूम्युलेटिव. क्यूम्युलेटिव आपको याद होगा अपने स्टैटिस्टिक्स से, एडिशन मतलब होता है उसका जो जोड़ते हैं किसी चीज को. तो ये सारे देखो, एंड, ऑल्सो, बोथ, दिस एंड दैट, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, और ये सारी चीजें जो है वो जोड़ रही हैं किसी दो क्लॉजेस को, दोनों के बारे में बता रही है. ये और ये साथ में ये भी और ये भी, तो ये ऐड कर रही है, इसलिए क्यूम्युलेटिव कहते हैं इनको. दे आर यूज्ड टू जॉइन टुगेदर टू सेंटेंसेस, नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स. ये सेंटेंसेस, नाउन्स, प्रोनाउंस. तो नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स जो हैं वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं. एक अकेला वर्ड हो सकता है जो नाउन हो, एक फ्रेज हो सकता है जो नाउन हो, प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो. ऐसे ही सेंटेंसेस हैं जो क्लॉजेस बन जाते हैं अगर उनमें फुल स्टॉप ना लगाया जाए, अलग से यूज किया जाए. दैट इज व्हाट दे आर क्लॉजेस, कॉल्ड क्लॉजेस, एंड टुगेदर टू क्लॉजेस कम टुगेदर टू फॉर्म वन सेंटेंस. Now these are used to join together two sentences, nouns, pronouns और adjectives. Example, he is rich and happy. अब यहाँ rich and happy दो adjectives हैं, इनको जोड़ा है and ने.
राम और श्याम दो नाउन्स है, इनको जोड़ा है एज वेल एज ने, सो राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। यू रिमेंबर एज वेल एज हम लोग ने देखा था वहां सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, जब एज वेल एज यूज होता है तो सब्जेक्ट का नंबर चेंज नहीं होता है उसमें, फिर भी हम राम की बात कर रहे हैं, राम श्याम भी साथ में, बट राम आ रहा है। So is coming. If you do not remember that, please make sure you are revisiting the lecture on subject verb agreement. And we've revised it once here, but subject verb agreement भी आप एक बार देख लें, पहला lecture, दूसरा lecture है वो, please go and revisit. Now we have types of coordinating conjunctions. पहला था cumulative, उसके बाद हम देख रहे हैं alternative. अब alternative मतलब, alternative का मतलब होता है विकल्प, वैकल्पिक, एक विकल्प से दूसरे विकल्प पर। तो cumulative था ऐड करना, दोनों चीजें ऐड हो रही थी, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक, एक या दूसरा, या तो ये या तो वो, सो ईदर दिस और दैट, ना ये ना वो, एल्स ऐसा नहीं तो वैसा, और ये या वो, अदरवाइज या फिर कुछ और, सो अदरवाइज डू दिस, अदरवाइज समथिंग एल्स विल हैपन, ऐसा करो नहीं तो कुछ और हो जाएगा। Now these are used when we to choose one out of the two options. अब दो ऑप्शंस में से अगर आपको एक चूज करना होगा तब ये वाला यूज करते हैं, इसलिए इनको ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो शांत बैठो या चले जाओ। यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो नहीं तो ट्रेन मिस कर दोगे। तो ये नहीं तो बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं, या तो ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, या तो ये करो या वो करो। Then we got the third type, cumulative था एडिंग वाला, alternative था ऑप्शन वाला। अब है adversative, adversative adversary से आता है, adversary मतलब दुश्मन, मतलब against, anti, तो जिसके विपरीत बोला जा रहा है। but, परंतु, yet, फिर भी, still, फिर भी, only, केवल, however, परंतु, nevertheless, फिर भी, while, wherein, जबकि, हालांकि, all of these used in the same way. In Hindi we can use the same word for many of these, but in English we have different words for different contexts and different use, just to give a bit more flair and flourish to your prose as well. Now used to join such elements that are opposite to each other in meaning. अब दो elements जो हैं जो एक दूसरे से विपरीत हैं अर्थ में, जैसे कि वह अमीर तो है परंतु खुश नहीं है। तो अमीर होना और खुश ना होना दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाएं हैं। माना यही जाता है कि अगर कोई अमीर होगा उसके बाद बहुत पैसे होंगे तो वो खुश भी होगा, परंतु अगर हम ये कहना चाहते, अगर वो अमीर है और बहुत खुश है तो और यूज होगा क्यूमुलेटिव, ही इज रिच एंड हैप्पी। बट अगर वो दुखी है तो हम ये नहीं कहेंगे ही इज रिच एंड सैड, वी विल से ही इज रिच बट सैड, कि वो अमीर तो है परंतु दुखी है। तो वहां एडवर्सेटिव कंजंक्शन यूज होते हैं जहां दो ऐसी बातें हो रही हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, जो एक दूसरे के साथ कॉमन सेंसिकल या कॉमन लॉजिक, कॉमन सेंस में दे वोंट गो विद ईच अदर और नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। एग्जांपल, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है परंतु खुश नहीं है। ही इज इंडस्ट्रियस, वो मेहनती है, स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, पर फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। क्योंकि भैया मछली को आप पेड़ चढ़ने की काबिलियत से आंकोगे तो कैसे उसके अच्छे मार्क्स आएंगे वैसे भी। Now types of coordinating conjunctions, आखिरी आ गया हमारा illative. Now is it the fourth one? Is it the last one? Maybe there are a few more. We've got cumulative, पहला था जो ऐड कर रहा था, alternative जो वैकल्पिक था, adversative जो विपरीत बता रहा था, अब illative की बात कर रहे हैं हम। Used to join together clauses where one is the result of another. अब illative मतलब result बता रहे हैं कि एक जो हुआ है वो पहले वाले के कारण से हुआ है, उस कारण से कोई चीज हुई है, that is why we calling it illative or as a result of another. Something definitely fell in, for I heard a splash, for, kyunki, because. Now you can also use because, since, as, all of these can be used as well. So something definitely fell in because I heard a splash. क्यों? मुझे पक्का है कि अंदर कुछ गिरा है कुएं में। क्यों? क्योंकि मुझे एक छपाक की आवाज सुनाई दी है। All precautions must have been neglected for the plague spread rapidly. सारी सावधानियां नजरअंदाज कर दी होंगी क्योंकि ये जो महामारी है वो बहुत जल्दी फैल गई। सारी ये हम मान रहे हैं क्योंकि महामारी जल्दी फैल गई, इससे हमें ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि उन्होंने सारी सावधानियां नजरअंदाज कर दी होंगी। All precautions must have been neglected for the plague spread rapidly. Alright, now we are on subordinating conjunctions. So there were four kind of coordinating conjunctions. There were cumulative, alternative, adversative, and illative. Make sure you understand the meaning of each and the difference between them. Please rewind and revisit as required to consolidate your learning. Subordinating conjunctions. अब subordinating conjunctions क्या देखो? If you work hard, you will succeed. अब यहाँ पे जो ये you will succeed है, ये पहले वाले पे निर्भर कर रहा है। अलग से अगर हम उसको लिखेंगे तो मीनिंग बदल जाएगी। अब you will succeed, you will work hard, you will succeed, उसका मतलब बदल गया कि आप मेहनत करोगे, आप
सक्षम होगे। अगर आप मेहनत करोगे तो आप सक्षम होगे, ये मतलब नहीं निकलेगा। उसको निकालने के लिए आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये एक दोनों दूसरे के ऊपर आधारित है, अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकते ये सेंटेंसेस, ये क्लॉजेस। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। सो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। सिंस आई वाज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप। सिंस आई वाज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप, क्योंकि मैं बिजी था मैं आपको कॉल फोन नहीं कर पाया। They join together clauses, one of which would lose its meaning when looked in at independently. अब ये ऐसे क्लॉजेस को जोड़ रहा है जिनको अगर हम अलग अलग देखेंगे तो उनकी मीनिंग बदल जाएगी, उसमें से कम एक की मीनिंग तो बदल ही जाएगी। तो आई वॉज बिजी, आई कुड नॉट कॉल यू अप। अब व्हाई कुड आई नॉट कॉल यू अप? बिकॉज आई वॉज बिजी। नाउ बिकॉज आई वॉज बिजी इट विल चेंज, आई एम नॉट टेलिंग द रीजन देयर, आई एम जस्ट सेइंग दैट आई वॉज बिजी, आई कुड नॉट कॉल यू अप, एंड वहां पे मतलब बदल गया। मैं कारण नहीं बता रहा हूं उसको, बस मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा भी था और ऐसा भी था, जरूरी नहीं है कि वो उसका कारण हो। The main clause is called the principal clause and the dependent clause is called the subordinate clause। अब जो मेन चीज जो हम बता रहे हैं, जो भी हम मेन चीज बता रहे हैं, जैसे you will succeed, I could not call you up, you will succeed if you work hard, ये मेन प्रिंसिपल क्लॉज है। और जो क्लॉज उस पर डिपेंडेंट है, जिसकी मीनिंग बदल जाएगी अगर हम उसको अलग रखेंगे, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और उस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने वाला जो कंजंक्शन है उसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। द कंजंक्शन दैट इंट्रोड्यूसेस द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। So this subordinate clause is introduced by this conjunction. These conjunctions here are called subordinate conjunctions. Or I will see types of subordinate conjunctions, subordinating clauses, types of subordinating clauses. First is for time. Time के लिए subordinating clauses introduce करने के लिए कौन से subordinating conjunction लगते हैं? When, जब, whenever, जब भी, till, तब तक, until, जब तक, before, उससे पहले, since, तब से, while के दौरान, as soon as, जैसे ही, as long as, जब तक, just as, जैसे कि। When I saw him, I stopped my car। देखो, जब मैंने उसको देखा मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। तो यहाँ पे when जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की तरह एक्ट कर रहा है। As soon as it rains, the farmers start sowing seed। कैसे? जैसे ही वर्षा होती है, जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो बोना शुरू कर देते हैं, बीज बोना शुरू कर देते हैं। So you will see here the subordinated clauses, they are talking about time, कि जब वर्षा होगी, जैसे ही मैंने उसको देखा, जैसे ही वर्षा होगी, जब मैंने उसको देखा। तो these are called subordinating clauses of time. Now you have subordinating clauses of place। ऐसी स्थान अगर बताता है तो वो where, wherever यूज होगा। You can go wherever you want, आप जा सकते हो जहां भी आप चाहो। You can go wherever you want, आप जा सकते हो जहां आप चाहो। Cause, अब उसका कारण बता रहा है, तो since, because, as ये हम लोग देख चुके हैं। For भी यूज हुआ था, she came for I called her up। As he is very charming, so she came because I called her up, क्योंकि मैंने उसको कॉल करके बुलाया इसीलिए वो आई। As he is very charming, क्योंकि वो बहुत चार्मिंग है। Everybody loves him, हर कोई उसे पसंद करता है, हर कोई उसे प्रेम करता है। These are cause, subordinating clauses of cause। ये cause बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा है इसलिए वैसा है। पहला वाला समय बता रहा था कब हो रहा है, दूसरा स्थान बता रहा था कहां हो रहा है, अब ये कारण बता रहा है क्यों हो रहा है। अब पर्पस बता रहा है उसका कि उससे क्या, that, so that, in order that, lest, so we eat so that we may live। हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। पर्पस क्या है हमारे खाने का? पर्पस हमारे खाने का क्या है? पर्पस क्या? we eat so that we may live, ताकि हम जी सकें। run fast lest you should miss the train। अब lest हमको फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। lest का एक बार हम लोग फिर से स्ट्रक्चर देख लेंगे। lest के बाद सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद should आएगा। अभी तक के सारे क्वेश्चंस में यूपीएससी के should ही यूज हुआ है। We shouldn't worry about that. I don't think they'll make any change there। Should is what they are going with, plus something you do not want। ये बस याद रखिएगा, यहां ये पकड़ते हैं आपको, something you do not want। यहां पे जो आपको नहीं चाहिए वो आना चाहिए। देखो देखो, should के बाद क्या है? miss the train। आप नहीं चाहते कि आप ट्रेन मिस करें, तो सही है। do not miss the train नहीं, lest you do not miss the train गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्शन क्या आ सकता है? lest you do not miss the train। lest you do not miss the train। This is an incorrect way of using it। This is not how you use it। lest के बाद वो नहीं लगता है जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि आप ट्रेन मिस ना करो, do not miss the train, वो नहीं लगाओगे। आप वो लगाओगे जो आप नहीं चाहते हो। lest you should miss the train, कि कहीं आप ट्रेन, क्योंकि lest का मतलब ही होता है कि कहीं डॉट 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 ना हो जाए, डॉट 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 वो जो यहां लगा है, तो इसके अंदर lest के अंदर समाया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि whatever, कहीं ऐसा ना हो जाए कि, that is what lest means। तो कहीं ऐसा ना हो जाए उसमें है ही अंदर, तो आगे हम वो लगाएंगे जो हम नहीं चाहते कि हो। I hope this makes sense। We've already covered it like twice or thrice। We'll cover it more times later on as and when it shows itself up during the course। Now the next type of subordinating clause is result। कि कारण भाई उसका result क्या है? So that, such that, he is so weak that। अब so और that लगता है साथ में ही देखिएगा।
ही इज सच अ फूल दैट ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सच के साथ एज भी लगता है, द सच फॉर एग्जाम्पल, सच बुक्स एज यू रीड आर ऑफ नो यूज। भाई कोई मांगा पढ़ रहा है, एनिमे पढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, मेरी अंग्रेजी अच्छी होगी, उससे नहीं होगी। आपको मजा आएगा, एंटरटेनमेंट हो रही है आपकी, भले अंग्रेजी बेहतर नहीं हो रही है आपकी, गलत ना समझिएगा उस चीज को। सच बुक्स एज यू रीड, तो यहाँ पे सच के साथ एज आता है कि ऐसी बुक्स जैसी आप पढ़ते हो, सच बुक्स एज यू रीड आर ऑफ नो यूज। यहाँ क्या है सच के साथ, दैट ही इज सच अ फूल, ऐसा है कि ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ही इज सो वीक दैट, सो के साथ भी दैट आता है, याद रखिएगा ये। जैसे बहुत वायरल वीडियो हुआ था, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल, बेटा वो ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि सो एलिगेंट के बाद आप वेरी एलिगेंट की जगह सो एलिगेंट नहीं बोल सकते। वो क्या बोलना चाह रही थी मैडम, वो कहना चाह रही थी कि बहुत ज्यादा सभ्य है, बहुत ज्यादा सुंदर है, खूबसूरत है, तो वो शी वांटेड टू से वेरी एलिगेंट वेरी ब्यूटीफुल, बट वो बेचारी सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल बैठ की हुई थी। सो एलिगेंट आप नहीं बोल सकते, सो एलिगेंट के बाद आपको दैट लगाना होगा, सो एलिगेंट दैट, इतना ब्यूटीफुल की क्या, सो एलिगेंट दैट एवरीबडी लव्स इट, और so beautiful that I cannot take my eyes off of her, for example. So beautiful that, इतना सुंदर की कितना, तो वो बताना पड़ता है उसमें इंग्लिश में ग्रामर, तभी सही होगी। तो ये so weak that he cannot even stand, वो इतना कमजोर है कि वो खड़ा तक नहीं हो रहा, तो so के बाद that के साथ में लगता है वो, इसको ध्यान रखिएगा। so elegant so beautiful ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, सुनने में चाहे कितना भी अच्छा लग रहा हो आपको। कंडीशन बता रहे हैं हम कि क्या कारण होता है, कुछ कंडीशन क्या लगेगी उसके पीछे कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। इफ सपोजिंग अनलेस प्रोवाइडेड, फॉर एग्जांपल ही कैनॉट सक्सीडेड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक वो सक्सीड नहीं हो सकता। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंस हिज वे, मैं उसकी सहायता करूंगा, बट बशर्ते, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, पर शर्त ये है ही मेंस हिज वेज, कि वो अपने कर्म सुधार ले। ही मेंस हिज वेज मतलब अपने कर्म सुधारना, मेंस हिज वेज, जिस भी रास्ते पर वो चल रहा है उसको बेहतर कर ले, सुधर जाए, उस रास्ते से अच्छे रास्ते पर आ जाए या रास्ता सुधार ले अपना। I will help him provided he mends his ways. So unless and provided. Types of subordinate, we have manner as well, as if, as though, as far as, he scolded as if he were my father, he scolded me as if he were my father, he scolded is also correct, it's not incorrect, he scolded as if he were my father, he scolded me as if, जैसे कि उसने मुझे ऐसे डांटा जैसे कि वो he like he scolded somebody, he scolded, maybe scolded her, maybe that's a woman saying that he scolded as if, scolded me as if you were my father. तो as if, as though, as far as और कैसे यूज होता है देखो। नोट, if as and since are used as because, then do not use so with them. Example, अब as और since हमने पहले देखा था, यहाँ पे as कैसा यूज हुआ है, जैसा, वहां पे as कैसा यूज हुआ था, क्योंकि, क्योंकि की तरह अगर as यूज होगा तो उसके साथ so नहीं लगेगा। कैसे, as I was ill I could not come, क्योंकि मैं बीमार था मैं नहीं आ पाया, यहाँ so नहीं लगेगा। So I was ill so I could not come, या तो as लगेगा या so लगेगा, दोनों चीजें साथ में नहीं लगेंगी। Since भी, since he is a virtuous man I cannot help but fall in love with him, क्योंकि वो इतना सभ्य और इतना मर्यादा पूर्वक पुरुष है, मर्यादा पूर्ण पुरुष है, कि मैं उसके प्यार में पड़ गई। Some woman is saying probably about me, since he is a virtuous man I cannot help but fall in love with him. So since अगर लगा है तो so नहीं लगेगा, as अगर लगा है तो so नहीं लगेगा। कब, जब as और since because की तरह यूज हो रहे हैं, जैसे हम लोग ने पहले देखा था जब for cause subordinating clause में। Please go revise, rewind, see if you do not remember. Then we have types of subordinating clauses में comparison, as adjectives में भी किया था हमने ये, as big as और as के बीच में positive degree लगता है, and we are using it for comparing two things that are equal in degree to each other, not different in degree. So they go out less than they did when they first moved to Paris. अब आजकल वो कम जाते हैं उसकी अपेक्षा जब वो पहले जाया करते थे, जब वो पेरिस आए थे। He is as good as she at English. He is as good as she is. तो she is लगता है इसलिए यहाँ पे she लगेगा, her नहीं लगेगा। इसको हम लोग कर चुके हैं I think in adjectives. If you do not remember, please go and check it out once again. So he is better than dash, dash में I होगा कि me होगा, भाई ग्रामर के हिसाब से I होना चाहिए, क्योंकि हम ही को कंपेयर कर रहे हैं, नॉमिनेटिव केस को कंपेयर कर रहे हैं, तो नॉमिनेटिव केस को नॉमिनेटिव के साथ कंपेयर करेंगे। ही इज बेटर देन आई, और एम अंडरस्टूड है, लिखो या ना लिखो, ही इज बेटर देन आई एम, और ही इज बेटर देन आई, नॉट ही इज बेटर देन मी। ही इज बेटर देन मी साउंड्स करेक्ट बट इट इजंट, इट इज नॉट करेक्ट इन ग्रामर। ऑलराइट, तो शी इज एज गुड एज
he is as good as she at English. So or as is used for comparing two people or things. So or as कहाँ use हो सकता है ये देखना. So as can only be used for negative sentences. सिर्फ negative sentences में he is so weak as he is not so good as whatever. So not जब लगेगा तभी आप so और as use कर सकते हो. अगर not नहीं लग रहा है तो आप as use करोगे और not लग रहा है तो so as दोनों use कर सकते हो क्योंकि as can be used for negative and positive. दिखता कैसा है ये? He is not so good as you. He is as good as you. अब यहाँ पे so की जगह as भी लग सकता है because we see as can be used in negative and positive. तो it's the same comparison of the positive adjective degree. ये good positive degree है as और as उसके आसपास आ रहा है. But in the negative we can also put so. He is not so good as you. But we cannot do so in the positive degree that he is so good as you. Next we have contrast though, although, however. दिस इज शोइंग कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट मतलब दो विपरीत अवस्थाओं को जब हम कंपेयर करते हैं कि एक चीज ऐसी है और दूसरी चीज उसके विपरीत किसी और तरह की है, उसको हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड. आपको याद होगा एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स भी वही काम करते हैं, पर वही है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे. दैट इज द ओनली डिफरेंस. दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, कि हालांकि उसने मेहनत की वह असक्षम रहा. He tried very hard, however, she could not win the race. उसने बहुत कोशिश की परंतु फिर भी she could not win the race. वह उस रेस को जीत न सकी. Alright, so that was that for our grammar section today. Let's continue with the question paper solving from the previous day. We did till question 30. We did all of these idioms and phrases. I'm sure you remember. If you do not, please go and revisit that lecture as well. Let's start with the ordering of the sentences. Ordering of the sentences में याद रखिएगा कुछ strategies हैं. हमेशा options के साथ options पर नजर रखते हुए question को देखिएगा कि कौन से यहाँ पे शुरू हो रहा है. जैसे P, P, Q और S R से शुरू हो ही नहीं सकता. So पहले ही मान लीजिएगा कि R से तो मतलब ही नहीं है शुरू होने का. End में देख लीजिए S, R, S और Q है, P से खत्म नहीं हो रहा है, तो P से it cannot end. You already know that. This quick piece of information, these pieces of data, as quickly as you can gather as many pieces of data without spending too much time on that, that is what we are trying to practice. For that you need to practice every day 5 or 10 questions as such. For that, again, if you can arrange for your own notes, well enough. If not, please come and contact us here directly. We have all the resources ready for you at Ma Tutorial in Indore. Let's check now what the answer of this could be. The subsidiary alliance system is extremely advantageous to the British. Now, why was it advantageous? Maybe they can talk about that. So either it could start with P, Q or S. Let's start with you. P. They could now maintain a large army at the cost of Indian states. That seems like something that could follow it because that is why it was advantageous to them. They could maintain a large army at the cost of Indian states. Then after that, let's see whether it is Q or S. What makes more sense? Or can it start with either Q or S? We've got, if any war occurred in the territories, it doesn't make sense, either of the British ally or the Britishers. This enabled them to fight wars far away from their own territories. They control the defense. So P, either of the British ally of the Indian states. If any war occurred in the territories, it seems P, Q, R, S seems to be the best option here. A, and let's just make sure once again by double checking, and if you have time you can also cross check with other options and see that none other makes sense. Anywho, so P, S, Q, R, let's see. So they could now maintain a large army at the cost of Indian states. This enabled them to fight wars far away from their own territories. If any war occurred in the territories, either of the British ally or of the Britishers, they control the defense and the foreign relations of the protected ally. So P, S, Q, R, B seems to be the best option here. Why is it not P, Q, R, S? Let's check that. They could now maintain a large army at the cost of Indian states. If any war occurred in the territories, either the British ally or the Britishers, this enabled them to fight wars far away from their own territories. They controlled the defense and the... So we are talking about wars here. First we will introduce which wars, and then if any war occurred in the territories. That is why S will precede Q and R. B would be the best option in this case. Alright, let's try the next one. 32. In reality, by signing a subsidiary alliance, an Indian state virtually signed away
its independence. I'm sure if you're doing your general awareness, your history section, you would know what subsidiary alliance system was and who it was introduced by. If you do not, please check that as well. General awareness really is not under my ambit as of now. Alright, so let's see what we can start with, either P, R, or Q. Q has two options. Let's check Q. It lost the right of self-defense. Yes, it did. Of maintaining diplomatic relations with its neighbors and of settling its dispute. Yes, so QRPS, it's not an option, but it starts with Q for sure. Either of these, either it's QPSR or QSRP. Let's see QPSR. It lost the right of self-defense, of maintaining diplomatic relations with its, yes, QP, and of settling its disputes with its neighbors. Alright, the QPSR. I think this makes the most sense. QSRP, it lost the right of self-defense and of settling its disputes with its neighbors, of maintaining. No, and should be in the third case. So QPSR makes the most sense. C is the correct option here. These are such questions that the correct answer of which is very easily figured out without any prep as well. Mostly you must work on your comprehension, a lot of practice of these questions if your comprehension is already strong. If not, then please be reading books. Try reading, if your English is at an average level already, try going through the Hindu newspaper every day. If not, then start with the Times of India and then gradually move on to the Hindu, I suppose. But you must practice your comprehension because that is what they are checking. And then there are some other strategies as well. I'll teach you in conjunctions. Right now we are looking at conjunctions. If there are any conjunctions or any obvious pairs that these two will definitely come together. For example, here we saw that and has to be at the end of a list. So we have to end it with S. We cannot have S in the beginning. That is why we knew C was the correct option. So all these strategies combined together help us in solving these questions. Alright, look at the 33rd now. A mighty popular revolt broke out in northern and central India in 1857. It did. Alright, so it's, and we have R, P, S, Q. So it can start with either of them. It has to end with either Q or S. Alright, will it end with Q or S? Millions of peasants, artisans and soldiers fought heroically and wrote a glorious chapter. It began with the mutiny of the No. But soon engulfed wide regions and involved the masses. This can, yes. So it can end with Q. It will either be A or C. It can't end with S because S cannot follow S. It cannot be preceded by, S cannot precede S6. S6 cannot follow S. It began with the mutiny of the millions of peasants, artisans and soldiers fought heroically. Doesn't make sense. But soon engulfed the wide regions and involved the masses, full stop. Millions of peasants, that makes sense. Now it began with the mutiny of the sepoys. So S and P is an obvious pair, right? SP is an obvious pair. And you will see out of the ones ending in Q, SP as an obvious pair is only in A. So RSPQA would make the most sense. Let's just cross check. RSPQ and nearly swept away. So mighty revolt broke 1850 and nearly swept away the British. Makes sense. RSPQ, it began with the mutiny of the sepoys or the Indian soldiers of the company's army, but soon engulfed wide regions have involved the masses. Millions of peasants, artisans, soldiers fought heroically and wrote a glorious chapter. So A would make the most sense here, and that is how you go through these questions. Let's do the 34th. The Indian civil service gradually developed into one of the most efficient and powerful civil services in the world, and it still is. We call our country poor. People call it a third world country, but we see that people become सरकारी नौकर here for power and prestige. जिस देश में लोग सरकारी नौकर बनते हैं पैसों के लिए और पावर के लिए, वो देश गरीब कैसे हो सकता है, मुझे ये समझाओ. और सरकारी नौकरी मेरे अनुसार एक बीमारी है, मानसिक बीमारी, सबसे बड़ी मानसिक बीमारी हमारे देश की. जिसको लगती है उसका दिमाग तो खराब होता ही होता है, उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान का दिमाग खराब हो जाता है. प्लीज आप लोग ऐसा ना करना. आप में से कोई भी अगर सरकारी नौकर बनता है तो सेवा योग से बनिएगा, बत्तियों में घूमने के लिए ना बनिएगा प्लीज, कि लाल बत्ती मिल जाए, नीली बत्ती मिल जाए. हमें दिमाग खराब करके रखा लोगों ने. एनीवे, let's see. The Indian civil service gradually developed into one of the most efficient and powerful civil services in the world. We can either start with PQ, RS can start with either of them, all of them, any of them. Though these qualities obviously serve, doesn't make sense. Can't start with S6, obviously it can't start with S6. And though these qualities obviously serve British and not Indian interest, qualities, we're talking about qualities. Which qualities? Independence, integrity and hard work are qualities. Alright, so it can end with Q maybe. SPRQ, let's try. Its members exercise vast powers. Yes, they did. And often participate in the making of policy. Yes, they did. They developed certain traditions of independence, integrity and hard work.
Though these qualities obviously serve British and not Indian interests, and still do. Not really, not really. So 34th D is what makes the most sense here. 34D is the correct option here. Alright. Let's do the last one for this 35th, then we'll do a little bit of comprehension. 35th, the ruin of Indian handicrafts was reflected in the ruin of the towns. Ruin मतलब खंडर, किसी चीज जैसे बर्बाद हो रखी है कोई जगह, वहां पे खंडर है, उसको ruins कहते हैं. Alright, let's see, you can either start with P, SS or Q. Let's see if we can start with, so centers were developed and laid waste. The ruin of Indian handicrafts reflecting the ruin of the towns and cities is famous for their manufactures. Dhaka, Surat, Murshidabad, many other rising industrial cities which had withstood the ravages. So SQ is an obvious pair. देखो, cities which had withstood the ravages. Withstood what? The ravages. Yes, makes sense. So withstood मतलब सहना, ravages मतलब उसके हमले, उसका शोषण एक तरह से. So withstood the ravages of war and plunder, failed to survive British conquest. Makes sense. So SQRP. I think 35th B makes the most sense, and yes, indeed, 35th B SQRP is the correct option. Yeah. See, the ruin of Indian handicrafts is reflected in the ruin of the towns and cities which are famous for their manufactures. Cities which had withstood the ravages of war and plunder, failed to survive British conquest. Dhaka, Surat, Murshidabad, and many other rising industrial centers were developed and laid waste. So the entire first world wealth is based on whatever was exploited and stolen away from my ancestors. So all of Europe, if anybody there is listening, I'm coming for you. The rule of the road. Let's do passage again. My suggestion is always read the question first. You will know then what you are getting into for the passage. You won't go in blind. Like you're preparing for your examination right now, you're not going in blind. You already know what kind of questions show up and you're preparing particularly for it. Similar in a mini way inside the passage before going in blind without knowing anything what the passage is about. First read the questions. That will give you a little inkling of what the passage is already about and what they're going to ask you. So you're approaching the passage with a purpose. You're approaching it with an idea of what you want to figure out from it. According to the author, the rule of the road implies. So there is a rule of the road, whatever it implies. The author thinks that when a policeman signals you to stop on a crossing road, he is alright. So there is a policeman as well. Some signals, some roads, something. The author is of the view that there is a view of the author. The author holds that. Author is very important here. The most suitable title of the passage would be, alright, love it. Let's see now. The rule of the road means that in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. Yes. So हर सब कोई आजाद हो सके तो हर किसी को बंधन में आना होगा. हर किसी की आजादी के लिए हर किसी को बंधन में आना होगा क्योंकि हर किसी की आजादी अनार्की हो जाएगी. So that is what the rule of the road implies. Regulating traffic, principle on which the road is constructed, unrestricted freedom for all. No. Restricted individual freedom to ensure freedom for all. That is the correct answer. That is what the rule of the road implies. 36th. Yes, indeed. Alright. Now the author thinks that a policeman signals you on the road. Alright. Policeman signal. When the policeman say at a road crossing steps into the middle of the road and puts out his hand, he is the symbol not of tyranny but of liberty. Yes. वो आपको जो रोक रहा है पुलिसमैन, वो अपनी पावर से टिरानिकल नहीं हो रहा है, वो आपके ऊपर तानाशाही नहीं कर रहा है, वो लिबर्टी इंश्योर कर रहा है कि अब ट्रैफिक सही से चल सके और हर कोई एंजॉय कर सके उस चीज को. तो कभी भी आप अगर कुछ चीज करने वाले हो अपने आप से यही पूछें कि हर कोई अगर यही करने लगे तो क्या समाज चल पाएगा. अगर आपको सही और गलत का कभी भेदभाव समझना हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, अगर ये प्रश्न आपके अंदर से उठे तो बस यही पूछिए कि हर कोई अगर ये करने लगे तो क्या काम चल पाएगा. अगर चल पाएगा तो वो चीज सही है, अगर नहीं चल पाएगा तो यू कैन कंसिडर दैट थिंग इज नॉट करेक्ट फॉर यू or for the society. Alright, so let's see. Yes, protecting the liberty of all to use the road. C is the correct option here. 37C. He is protecting the liberty of all to use the road. He is protecting everybody else from you by making you follow the rules. So you must understand that. 37th C. Alright, you've submitted to a curtailment. Curtail मतलब कम करना किसी चीज को, restrict करना of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality. भाई जो एक social contract में हम लोग आते हैं कि भाई हम नहीं एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, वायलेंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि. And that is why society functions. We have both liberties to preserve, our individual liberty and our social liberty. That is, we must have a judicious mixture of both. I shall not permit any authority to say that my child must go to this school or that, shall specialize in science or arts.
These things are personal. But if I say that my child shall have no education at all, then society will firmly tell me that my child must have education whether I like it or not. तो भाई मेरा बच्चा क्या पढ़े, कहाँ पढ़े, ये आप ना बताएं मुझे, पर पढ़े ये तो डेफिनेटली निश्चित करना चाहिए सोसाइटी को कि हर बच्चा पढ़ रहा है, कि हर किसी को शिक्षा मिल रही है. The author is of the view that we should have absolute individual liberty without any restrictions. No. Have everything controlled by the society with any idea? No. Try to strike a sensible balance between our individual liberty and our social liberty. Yes. So that is what seems to be the best option here. More of social liberty than no. He's saying we have to strike a sensible or judicious. So the word he used in the passage was judicious. So judicious means justice, based with justice, based with the judiciary, sensible, balanced. That's something that is not partial, something that is unbiased, impartial. Yeah. All right. Now here the author holds that educating or not educating his child is a matter of personal liberty. No, that is not a matter of personal liberty. Educating or not educating is also a matter of social liberty. No, it is not. Choosing the school of a child is a matter of social. No. Choosing subject of study is social. No. What? Personal. Educating or not educating his child is also a matter of social liberty. Social liberty is, that means that as a society, what are you free to do or not free to do? So I think 39th B is the best option. That indeed is. The most suitable title of the passage would be yes. Policeman at road crossing doesn't make sense. Laws of the road doesn't make sense. Education of children, not really. That's just an example. Importance of liberty or what liberty is, that is the exact meaning of this passage. Alright, next passage again. Consider the following statements. We have 4 statements. Tiny bat, lost direction. We read R gone wrong. Entering the author's skill in flying. Talking about bats. The bat entered the room. There's a bat. We're talking about bat in this. Alright. After comparing the habits of the tiny bat with the other bats, the author, tiny bat and other bats called the tiny bat interesting visitor. There's an interesting visitor. This means, what according to you can be the most suitable title for the passage? Let's see now. Let's read the passage. My most interesting visitor comes at night when the lights are still burning. A tiny bat who prefers to fly in through the open door and will use the window only if there is no alternative. His object in entering the house is to snap up the moths that cluster around the lamps. All the bats I have seen fly fairly high, keeping near the ceiling. But this particular bat flies in low, like a dive bomber, zooming in and out of chair legs and under tables. Once he passed straight between my legs. Has his radar gone wrong, I wonder, or is he just plain crazy? Alright, now consider the following statements. The tiny bat flew in low like a dive. Yes, he did. Was it a tiny bat though? All the bats he fell. Tiny bats. Here's the object. A tiny bat, yes. So tiny bat flew in low with a dive bomber. It did. Bat, like all bats, kept near the ceiling. No, it did not. It has lost direction because the radar has gone wrong. Maybe. It wants to enter the author with its skill of flying. Maybe. Alright. Which of the statement may be assumed from the information given? Alright, so only one. Everything else cannot be assumed because all of them are maybe. This is absolutely false. This is the only thing that we know for sure to be true from the passage. So, one only. 41st A is the answer. Now we go to 42nd. The bat entered the room because there was no alternative, or to eat the moths around the lamps. As it had gone mad, it preferred to fly in through the open door. I need to eat the moths around the lamp is what all the bats came in for. It states so in the passage, to eat the moths. वो जो तितली जैसे तो नहीं होते, तितली मतलब अगली और butterflies. They are उनको हम लोग ततैया कहते हैं शायद, नहीं परवाना कहते हैं उर्दू में. I think that is what it is. Moths are called. They seek lights. They seek the light of the lamp and the lantern as well. Those are moths. Alright. After comparing the habits of the tiny bat with those of the other bats, the author was sure that the bat had lost its direction, not sure of its preference, surprised to find it was an expert flyer, unable the correct explanation for its behavior. Alright. So we'll see. He wasn't sure what the bat was. Was he wrong? What was wrong with him? So he was unable to give the correct explanation for its behavior. That is the best answer here. The author calls the tiny bat an interesting visitor. This means the bat visits him night. The bat is interested in the moths. This bat has peculiar qualities. The bat surprised him by zooming in around like a dive bomber. So he has peculiar qualities. That is what the author is trying to say, that he was an interesting visitor. He was a peculiar one. He was the eccentric one. He was not the common one. He was not the general one. He was not the average one. He was different. What according to you can be the most suitable title for the passage? Someone visits me. My nocturnal visit. Nocturnal means someone that doesn't sleep at night. So this is the best one here, nocturnal, because bats are nocturnal. Nocturnal means animals that do not sleep at night, that wake up during
the night when the sun is down and hunt and live at that time, and sleep during the day when the sun is up. Those are nocturnal creatures. Alright, now we got the last section, fill in the blanks. The tired traveler dash on in the hope of finding some resting place. Alright. Plodded on. So for 46 it is plodded on because strolled होता है leisurely, बहुत आराम से चलना. Scurried मतलब चूहे की तरह जल्दी जल्दी भाग जाना. Paraded तो मतलब strict march होता है. यहाँ पे tired लिखा है तो plodded मतलब भारी भारी उससे पैरों से चलना. The car was damaged beyond repair in the ghastly or nasty accident. So we'll use nasty accident. In the nasty accident, बहुत भयंकर भयानक नास्टी जो देखने में दहशतगर्द nasty accident. They gave a dash dinner to celebrate the occasion, which impressed every guest. Sumptuous, sumptuous austere होता है बड़ा strict कम खर्चे वाला. Public भी कोई मतलब नहीं है, summary कोई भी मतलब नहीं है. Sumptuous मतलब एकदम बढ़िया खान पान, बढ़िया शाही दावत. Sumptuous dinner. So 48th will have C as the answer. 49th. Once the dash manuscript is reviewed by the publishers, it is typed in double space on the complete manuscript. Not the total manuscript, not the full manuscript, the complete manuscript. The complete piece of work. Your complete homework here. Complete manuscript. Alright, I am used to standing in queue. So I am used to. Here used to is the modal used to. And you will check that in the verbs basics lecture. You can go back and revisit and see what used to means. That I am used to. मतलब उसके आदि हूँ मैं. So I am used to, उसके बाद gerund लगेगा, उसके बाद ing form लगेगा. 50th का I am used to standing in queues. That's that for our lecture today. I hope you learned something new. Make sure to like, share and subscribe if you did. I'll see you in the next one.